जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सैटरडे दोपहर है और जनरल नारायण हमारे साथ हैं। आज थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि जो मेरा एक छोटा छोटा नहीं बहुत बड़ा भाई है, आप सब जानते हैं, सबका बड़ा ही फेवरेट आदमी है। ठीक है, थोड़ा अगर रात को ज़्यादा टाइम उसकी शक्ल देख लो तो नींद नहीं आती है, वो अलग चीज़ है, बट ही इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड जनरल नारायण का बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट भी है वो। मोदी साहब का भी बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट है, तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस की कहीं ना कहीं घंटी बजनी शुरू हो गई है। एंड देखिए, ये जो एक बंदा है, इट इज नॉट एक बंदा, इट इज अ साइन ऑफ अ कोलैप्स। एंड वो कोलैप्स आपको जो दिख रहा है उसके बारे में लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम जनरल नारायण। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। पहले तो सर चेन्नई एकदम सब ठीक ठाक? नहीं नहीं, आज रिलेटिवली बेटर ऑफ नाउ। सर्विस लिफ्ट और एक लिफ्ट हमारा काम कर रहा है, बाकी लिफ्टों में इतना पानी चला गया था अभी भी, मतलब यू हैव प्रॉब्लम्स दैट all the panels and everything have to be repaired and replaced, and there are still places in Chennai which are underwater. So it will take a while, but our area generally is okay. Home delivery shuru ho gaya, matlab it's okay. And the first home delivery we started getting, and I would give full marks to Zomato. लिफ्ट नहीं था, 17 माले पे आके खाना दे के जाता था बंदा। यार ये 17th फ्लोर पे, मतलब नहीं, मैं तो दिन में 2 की 3 चक्कर तो मेरे लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको तो अच्छा वेट लॉस हो गया होगा सर। नहीं यार, ठीक है यार, तो दैट्स अ गुड एक्सरसाइज। बट आई इमेजिन जोमेटो डिलीवर एट डोर, तो दूध वाला नीचे दे के जाता था गार्ड के पास, आई हैड टू गो डाउन एंड कलेक्ट इट। जोमेटो डोर पे डिलीवरी दे के जाता है, दैट्स द डिफरेंस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, राइट। सो बट अब तो लिफ्ट काम कर रहा है तो ठीक हो गया है। मेड वेड के भी घर वगैरह में सब पानी थे, जो मेरा कार क्लीनर आता था उसके घर में भी उसने फोटो भेजा था, थाई डीप वाटर, सिलेंडर विलेंडर सब उठा के रखा था, मोटर बाइक को भी उठा के रखा था बेचारा भी। मोटर बाइक का जहाँ पे उसके पार्किंग एरिया था वहां दिखाया, वो पूरा मतलब सीट लेवल तक पानी था पूरा मोटर बाइक। मेरे खुद के गाड़ी को अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैड टू टेक इट अप टू द सेकंड स्टिल्ट पार्किंग। वाटर रात को वो नीचे था, बाय अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वेंट डाउन इट वाज ऑलरेडी एट माय दरवाजा यार, फ्लोरबोर्ड में तो पानी आ गया था अंदर, टू टेक इट अप। वाओ वाओ। दैट्स द वे तो इट सर ये इज। क्या हो रहा है, पहले बताइए। आई मीन व्हाट इज या हैपनिंग? ये सडनली दुकानें देखो, बंद होनी शुरू हो गई हैं। आई मीन हाँ, लोग थोड़े हिलने शुरू हो सबसे गए हैं। सी लाइक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई अभी न्यू ऑर्डर आना है, ओल्ड ऑर्डर जा रहा है, और न्यू ऑर्डर में ये जितने लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट वगैरह हैं इनका कोई रोल नहीं। दे हैव आउटलिव्ड द यूटिलिटी, सो बट वी विल कवर अप। इतने जल्दी ओवरनाइट तो होगा नहीं। तो सबसे पहले तो ऐसे लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस हैज बीन थ्रोन अंडर द बस, एंड दैट कम्स फ्रॉम वो जो न्यूज आया था यूएस एडमिन, जिन्होंने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ऑन अडानी को ट्रैश कर दिया, एंड दैट वाज टोटली सोल्ड बाय जॉर्ज सोरोस सब तरफ, एंड ही वाज पुशिंग इट। वन वर्ड, ट्रैश्ड इट, एंड दैट्स इट। एंड यू मतलब फाइंड रिएक्शन ऐसा था कि ऐसा कुछ भी है? अच्छा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट? नहीं 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 नहीं, देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। टोटली ट्रैश कर दिया। दैट शोज दैट ही इज द फर्स्ट कैजुअलिटी नाउ हु हैज आ गया है। दूसरा जो दिखा है in US is the extreme anger against the presidents of Harvard, Penn, and MIT when they were giving the congressional hearing, their responses on anti-Semitism, and it was ridiculous. I saw it live. मैं अगर वहां पे होता तो उठ के थप्पड़ मार देता। तीनों औरतें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थप्पड़ पड़ जाते सबको कि बाप ने बचपन में दिया नहीं था, रसीद के एक पड़ जाता पहले कंटाप के नीचे, तो ये सब अकल के हो जाते। उसके बाद टू ऑफ देम ट्राइंग टू रिपेयर द डैमेज,
Harvard and Penn. MIT has not reported. But the worst cases where the angers are rising high is that the board is supporting them. The college boards are supporting them. हालांकि full member board नहीं है, फिर भी if you have about 10-11 of them on a board and you are supporting them, it tells you the rot runs so deep. Okay. UPenn has already started losing. Actually, I would say the both Claudine Gay of Harvard and Penn, Elizabeth McGill, they started retrieving themselves and trying to say no, actually saying I was misunderstood. अबे घंटा गधे, हम तो सुन रहे थे लाइव यार, तो बोल क्या रही है, अब कैसे बोल सकते हो तुम? हंस के बोल रही थी सर. Yeah, laughing, smiling. और वहां पे उसको थप्पड़ पड़े होंगे क्योंकि डोनेशंस खत्म होने लगे. 100 million you don't scream at यार. 100 million you don't scream at. बट आप वही बोल रहे हो ना, डिस्पाइट दिस अभी तक सैक नहीं हुए. 5 तारीख को किया था, राइट? अभी तक नहीं कर रहे. सो द क्वेश्चन व्हिच कम्स अप इज, दैट इज वेयर आई वुड से, because of these actions and the repercussions which have taken place in Europe and the Western European countries, you now see the rise of the right. जी. जिनके ऊपर ये हंसते थे, तोड़ते थे, you find those people are coming up. अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें. Okay, so I don't say the game is up, but the beginning of the end has started. Because what you noticed on the streets of all these countries by the Islamists and the leftists after the what happened on October 7th, Gaza war pe, it looked more like descent into chaos. People had no control. Yeah, कुछ भी नहीं था सर, खुले में एकदम. Yeah, which so I am 100% sure come all these elections next year in various countries, they want to dump all these politicians and go with the right. And the line of the right is, जितने मुस्लिम हैं हमारे देश में, अच्छे बुरे couldn't be concerned, pack up and go back to your countries or whichever Muslim country is going to give you refuge. I really don't understand what UK is going to do. वो तो कह रहा मैं रवांडा भेजूंगा of all the things. तो रवांडा में मुस्लिम कहाँ है? And it's a funny thing people come out with. But much needs to be done. Kyun? Why I say so? Google it and check who are the biggest annual donors to these Ivy League colleges. It is China and the Muslim world. Qatar. Out of the Muslim world, Qatar is out of China and the Muslim world, Qatar is number 1 and China is number 2. Are you surprised that they are all leftists, extreme leftists, and you have the rise of Islamists out there? There is no surprise. From 90s till now, these countries have given close to $2 trillion. That is the kind of money that has come in there. Okay. So because of that, they have managed the narratives for so long. It's almost 30 years that you manage the narratives. What happens from this Ivy League? It's not just the US. At a global stage, you find their alumni hold key positions in government, business houses, think tanks, media networks, education institutions, other education institutions around the world where they are selling all these ideas. Look at the kind of networking and the reach these people have had. दो तो हमारे हैं, Ratan Tata, despite knowing even by 2010 and all, you knew the anti-India narrative which was there in Harvard. But just because he had done some course in Harvard, he donated $50 million for that Tata Hall business. Can you imagine, sir? पैसे बहा रहे हैं बस लोग वहां पर. Right. क्यों वहां पर वो बोर्ड पे नाम आना चाहिए हमारा. One time दिया था $20 million.
and Anand Mahindra gave $10 million for a chair in the name of his mother, Indra Mahindra. But I would say, वहां क्यों दिया, हमारे यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे यहाँ क्यों नहीं चेयर बनाया? चेयर बनाने से फायदा क्या हुआ? वो हॉल बनाने से क्या फायदा क्या हुआ? Have you had anything to do with the narrative? No. Narrative तो वही रहा है. So that is the biggest problem. And so you find that the new state will have to revamp the complete structure. I don't know whether the new state will be under the same Crown Council or somebody else. Because I look at the emerging rich businessmen like Elon Musk and all challenging the Committee of 300 and the structure that was there, complete structure. But it takes time, because the structure that you have to change and you got to bring in, you got to see whom are you going to bring in. So what I visualize is the shift will be initially gradual and then thereafter it will gather pace. वो स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी ना. The irreversible movement has taken place. This movement is irreversible. The change will take place, but धीरे धीरे होगा. हाँ, you were saying something. स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी ना सर, जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे. Stability in the sense that you have to take a deep call and decide who would be with you. What kind of structure you're going to make? Will it be the similar one committee, similar sort of a thing which controls media network, which controls funding, which controls think tanks? Are you going to do that? Okay. So sidelining of Soros and naming and shaming of these three presidents is just the start. That's the start. That leads to the bigger question कि यार ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट ये तो बहुत स्ट्रेंज बेड फेलोस हैं. जो लेफ्टिस्ट हैं वो तो एथिस्ट हैं, बट जो इस्लामिस्ट हैं दे आर रिलीजियसली एक्सट्रीमली फंडामेंटलिस्ट. The only thing which they agree upon is they are both anti-democracy. वो अलग बात है कि जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं वो तो आपके फैमिली तक को ब्रेक करना चाहते हैं. They don't want you to have the support of the family structure, so that everything and for anything and everything you will be dependent on the extreme leftist organization. Ecosystem, echo chamber. Yeah, you will be dependent only on that. Whereas the Islamists don't look at it that way. They are a very highly patriarchal society, but they value their family. They value the family. So, moot question ये हो जाता है कि who is using whom? ठीक है. अब जिस तरह से आप देख रहे हो using the Islamists, leftists, look at the spread of Islamists within the Western Europe, which came out in the open. And that again is the major reason why the leftists are going to lose out in the coming elections. Nobody wants the country to go to dogs. Correct. The Islamists, the brand of Islamists who are taking over the Western Europe are wanting to push you back to the 8th century, 7th, 8th century. Nobody wants that. Right? So, the basic issue finally which comes to the new deep state would be controlling the leftists. You will still be able to manage. Dheere dheere karke you will weed out and get your own people inside. How do you control now the Islamists who have made use of these leftists and come up so strong? एक सवाल यहाँ पर सर. Now किसने किसको यूज करा है सर, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज एक्सपैंड, बिकॉज देखो
ये जो Islamists have made full use of the leftists. दूसरी तरफ भी है सर? No, the leftists were only using it for furthering the gain. उनको कहां पता था कि धीरे धीरे से खोद के तो उसके घर को ही दीमक से चाट गए. अब they were idiots. ठीक है, you use the Islamists, but why did you let them come into your country by the millions? हाँ. And the kind of social support you are giving, काम करने की जरूरत नहीं है, $3,000 हर बच्चे के लिए एक्स्ट्रा पैसा. Have you ever thought this? So there nobody works. पढ़े लिखे भी आते हैं, काम करने को तैयार ही नहीं है. औरतें तैयार हैं कि हम तो बच्चा प्रोड्यूस करते रहेंगे, हर बच्चे के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है. फ्री लोडिंग यार. You never gave freeloading to all the others who sought asylum and came there. Why freeloading to Islamists? No, that is where the whole problem comes. That's why I was put that question: who used whom? And in my reading, the Islamists have used them very well. They know they cannot contest China at the moment, but if they had gained control of these areas, next on the hit list would have been China. यूरोप साफ हो गया, मिडिल ईस्ट साफ हो गया, हमारा और चाइना. चाइना में भी अकल नहीं है अभी तक, अभी भी इस्लामिस्ट को सपोर्ट कर रहा. वो तो hoping to gain a foothold in West Asia. Okay, because while you can control the leftists, the Islamists are like a genie. Once it is out of the bottle, बड़ा मुश्किल है वापस अंदर डालना. Ask the common man in Pakistan, in Iran, and in Gaza. Simple. Does he like what he is living? The poor man has no choice, so he is living that life because he has no other choice. But would he, given a chance, would he like to live that life? Yes, sir. So that is why I said कि भाई इसको तो निकाल दोगे, उसको टारगेट कैसे करोगे? And I think that is the reason why slowly people are coming around to the view कि इन सबको Muslim countries को भेजो and let them sort out their own problems themselves. Ultimately वही होगा. But ये तो long term plan है. जिस कंट्री से आपने असाइलम लिया उसी कंट्री में जाओ और बोलो आप सॉर्ट आउट करो इसको जिस तरह से सॉर्ट आउट करना है. Okay, so when you look at this, what is the way ahead? And I'm talking about the immediate, about 10 years from now. तो सबसे पहले जो सोच लानी है, जो नए आ रहे हैं ऊपर, कि ये जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, यू हैव टू ब्लॉक देयर फंडिंग. सबसे पहले फंडिंग ब्लॉक करो और एक एक करके उनको साइडलाइन करते चले जाओ. यू हैव लेफ्टिस्ट इन एवरी डोमेन. टाइम लगेगा बट धीरे 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 करके निकालना है, बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मैन whom you want to place there. Like Elon Musk is there. He alone may not be able to do it. Melinda Gates is there. Who else from the other countries will form the group? What happens to the Crown Council? The old families जिनके पैसे hedge funds में लगे हुए. How do you manage these hedge funds? No, these are various issues that come up. All these media houses which have been run by the leftists, WAPO, NYT, to name just two, how do you manage them? Do you throw out the people, get new one, or make sure it is sold to somebody whom you want? Just because you want to topple off those people who are running the policy, there are a lot of people on their payroll. How do you sift through that payroll people who are the leftists? It's not an easy task. Correct. It's not an easy task. But also remember, like I mentioned earlier, कि भाई ये
आपके सोसाइटी के हर डोमेन के अंदर बैठे हुए, हर देश में बैठे हुए, हम तो देख ही रहे हैं अपने देश के अंदर ही, वो चुपचाप से जाएंगे नहीं, बैकलैश होगा। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा एंड बी स्ट्रांग इनफ टू काउंटर दोज बैकलैश। ठीक है, अभी जैसे देख लो यार, आई लिटरली लाफ एट दिस वुमन महुआ मोइत्रा। सब गलती करने के बाद ऐसे चल रही है कि जैसे हम तो सही है, हमने कोई गलती नहीं की। क्या यार, नो स्क्रूपल्स एट ऑल, एथिक्स तो छोड़ो, नो स्क्रूपल्स एट ऑल यार, एंड ब्लेटेंट। एंड इवन मैडम अपना ममता बनर्जी सपोर्टिंग हर। क्या यार, किस दुनिया में है ये औरत? अभी तो ये तो शुरुआत है यार, अभी तो सीबीआई ने उसके ऊपर केस करना है, बिकॉज हर अकाउंट हैज बीन एक्सेस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। नेशनल सिक्योरिटी केस है, नेशनल सिक्योरिटी केस है, बिकॉज शी वाज ऑन वन और टू की स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, आईटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो उसकी तो लुटिया डूब रही है और तुम खड़े होकर सीना तान के। सी, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ दोज लेफ्टिस्ट। They have not realized that they're going. Because अभी तक तो वही सही थे कि उनका कुत्ता टॉमी था, हमारा कुत्ता कुत्ता था। अब उनको पता आ रहा है कि नहीं भाई, तुम्हारा कुत्ता भी कुत्ता ही है, टॉमी नहीं है। तो चीखेंगे कि नहीं भाई, हम तो टॉमी है हमारा। एंड द 3-4 countries, 4-5 countries who need to be isolated now, ideally over a period of time, you got to isolate them. First is China, second is Qatar, then you have Iran, then you have Turkey and Pakistan. ये मूल जड़ हैं आपके इस्लामिस्ट के, इनको खत्म करो। एंड इजिप्ट हैज टू बी गिवन दी ग्रीन लाइट, भाई साहब मुस्लिम ब्रदरहुड को सॉर्ट आउट कर दो, वरना देख लो क्या हो। और ये 5 कंट्री हैं जिनको आप अलग कर दो सिस्टम से, यूएन से भी निकाल दो, आइसोलेट कर दो, जब तक चेंज नहीं होता है। यू विल सी, you will be able to sort out the Islamists to a large extent. I don't say the genie will go back in the bottle so easily, क्योंकि these are things which over multiple generations it will change. It won't change even this 10 years के अंदर, it won't change. You may isolate them, but still it takes time. And most important final point, पूरे यूएन को रिस्ट्रक्चर करो। बिक चुके हैं इनके हाथों में, लेफ्टिस्ट के हाथों में बिक चुके हैं, इस्लामिस्ट के हाथों में बिक चुके हैं। जस्ट इमेजिन सीज फायर, द वर्डिंग विच द यूएस वीटोड, सीज फायर मांग रहे हैं विदाउट आस्किंग द पैलेस्टीनियंस टू रिटर्न द हॉस्टेजेस। व्हाट काइंड ऑफ यूएन इज दिस यार? आई मीन इस एक चीज में आई एम डेड अगेंस्ट यूएसए, स्पेशली ये पन्नू पुन्नू नुन्नू चुन्नू जो कर रहे हैं, इस एक चीज में सर मैं खड़ा हूं उनके साथ में। At least they had the gumption enough to stand up for their own. What nonsense! You're not even asking them to return the hostages. किस दुनिया में बैठा है ये यूएन यार? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इसको गुतरेस को तो गाजा में फेंक के छोड़ देना चाहिए कि जा यार, भुगत तू गाजा में। फ्रांस, जर्मनी, जितने हैं, चाइना वाइना, सबको फेंकना चाहिए वहीं पर ही। What nonsense are you talking? Similarly, I think there is a need to speed up the global supply chain shift. The first step immediately after all this has happened by apna Apple. They've removed all the R&D from China. Mobile phones ka R&D is coming to India. iPad is going to Vietnam. बैटरी भी आ रहा है। Pardon? बैटरी से, बैटरी का R&D including the battery manufacturing. Everything is coming to India and iPad has gone to Vietnam. वो फर्स्ट स्टेज उसने कर दिया है। ऑल दी अदर कंट्रीज हैव टू बी गिवन अ शट अप कॉल और उनको बोलना पड़ेगा कर दो, और आइदर दिस और, बिकॉज लाइक आई सेड, इट
this is I have given a period of next 10 years. जी. I also agree कि global supply chain overnight change नहीं होता यार, but काम शुरू करो ना. Like if you look at Apple, they started work with us around 2015-16, धीरे से शुरू कर दिया था. 17-18 में आना शुरू हो गए थे. अब 5-6 साल बाद he is in position to do the change. अब he is not yet shut the factory in China. जो भी खुलेगा, थोड़ा बहुत जो बनेगा वो बनेगा, but the R&D is not there. At a certain point in time, iPhone 16 यहाँ पर होगा ना रिसर्च yeah, उसका. at a certain point in time, I'm sure वो सारा कुछ बंद करके दूसरे जगहों में भी शिफ्ट कर देंगे जी. अगले 5 साल में. तो उसी तरह से the other companies also have to start looking at these things, and I think the big countries which need to take a closer look कि भाई तुम सही कर रहे हो कि नहीं, economy be damned, are Japan, South Korea and Taiwan. They still have a lot of MSME dependencies on China. They have to take a call one way or the other after all this shenanigans कि भाई आप किधर जाने वाले हो, किसके साथ. And in any case, Elon Musk is already in talks with you for his car. नहीं सर, उसने जो इंटरव्यू दिया ना इलॉन मस्क ने, yeah, that was very telling. ठीक है. So you notice that yes, a shift has started. जी. And the first step has been that George Soros has been shown as he's expendable. He thought he was inexpendable. He's been indispensable. He's been shown that, bhai sahab, you are Mr. Expendable, and you are the first expendable, the first in priority as expendable. You are out. So the moment you are out, now you have to hit his funding. इसके पैसे निकालो. जैसे ही वो पैसे निकलते चले जाएंगे, ये सारे जितने इसके माउथपीस सब तरफ बैठे हैं, उनके पैसे सब खत्म हो जाएंगे. और जैसे ही पैसे होंगे, आप देखो किस तरह से ये करवट बदलते हैं. 3-4 तो अपने ही यहाँ पे है. उनको पहले हाय मोदी बोलते थे, अभी हेलो मोदी, कितना अच्छा मोदी, सारे शुरू हो गया. मतलब करवट ही बदल गई जब पैसे नहीं है तो. So these are things which will happen, and I am convinced it is happening. It will continue, but the threat still remains the fundamentalism, Islamic fundamentalism. That will not go down in a hurry. Leftists may, in about a decade or two, will peter out completely, but Islamists change will take at least 3-4 more decades. इतने जल्दी नहीं जाएगा. Because that is ideological, and to change an ideology and thinking takes multiple generations. और ये कोई मुझे ये मत बोल देना कि ये पढ़े लिखे नहीं है, भूखे नंगे हैं. सॉरी, पढ़े लिखे लोग हैं, भूखे नंगे भी हैं, और पढ़े लिखे और पूरे पैसे वाले लोग भी हैं. डोंट टेल मी हानिए इज भूखा नंगा यार. डोंट टेल मी याया सिनवर इज भूखा नंगा यार. पैसे वाले हैं, और इनके भी लोग सारे पैसे वाले भी हैं. काफी पैसे वाले हैं who are with them. So this was what I had to say, that yes, the उल्टी गिनती लेफ्टिस्ट की शुरू हो गई है. या तो सर मैं अपने रैपिड फायर कर दूं पहले. हाँ जी, मैं जरा रैपिड फायर कर दूं सर. हाँ बिल्कुल. बट मेरे को सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना है. आपने एक दो सवाल जो मेरे पास थे वो तो कवर कर दिए, बट ये सोरोस, व्हाई सोरोस, इसको क्यों चुना गया? सबसे पहले तो एक तो आके इसको पब्लिक फेस करना. नहीं उससे पहले द होल इश्यू वाज, अभी तक जहां पे भी ये लेफ्टिस्ट का जो कुछ भी हुआ था, सोरोस नेवर केम आउट इन द ओपन. उसके ऊपर इन्हें क्वेश्चन मार्क जरूर लगता था कि इसने किया होगा, लगता है इसने किया है. इस तरह से खुल के पहली बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ ये आया था अगेंस्ट अडानी. एंड आई थिंक ही वेंट अगेंस्ट
cross that red line. See, you link all regime change and other things to Victoria Nuland ki wo aati hai, jati hai aur regime change ho jata hai. It's circumstantial. Direct evidence nahi hai, it's circumstantial. Same was the case with George Soros कि open society आता है, ये करता है, वो करता है, फिर regime change हो जाता है, ये होता है, वो होता है. This was the first time he came out in the open where there was no need for him to come out. Came out in the open and gave statements against our honorable Prime Minister. जी, नाम लेके. That is when people would have thought that जब change हो रहा है, that this man is expendable. Because see, if you paint yourself in a corner, you have not left any avenue for you to go out. That's not diplomacy. That's not how you work. And he painted himself into a corner. And the moment the US government says that Hindenburg report is trash, and he should have read the writing on the wall, because even when he was producing the Hindenburg report, the Sri Lankan government was already in talks with Adani, US, and Japan were to talks. Indonesia was in talks and Israel was in talks. Australia also was in talks. Coal mine. Sorry, yes, Bob Brown Foundation. Yeah, so you could have read that. And today, another berth in Colombo is being made by Adani, funded by Japan and US. Ji. And there are talks that slowly, US will squeeze out China from there and the port will be run by Adani. You can't read this and tumse pata gada nahi dekha. That you came out in the open. And you came out in the open, so you're thrown under the bus now. Now you have no place to hide. हमारे बंदों के पास भी कितने मीडिया ने इसको उछाला है. डिस्कस किसने किया? इतना हाय तौबा कर रहे थे अडानी 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 अडानी, और वो भी खड़े होके बोल रही है कि मैं तो क्योंकि अडानी के पीछे पड़ी थी. तो ये 2-3 थिंग्स. अडानी का हाय तौबा महुआ तो कर रही थी. She is directly in touch with the leftists in the US. Why obviously, I say so? Yaar, last year, I think September or October. Yeah, last year, October. Adani was given the Haldia port. That deep sea port jo banana hai. Tajpur, deep sea port. The project was given to Adani. Adani walked out now because of the bureaucratic delays जो हो रहा था कि भाई पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे, आप green light sanction नहीं कर रहे हो. Despite that, there is, I think, Haldia port he runs and there is one more thing he runs. So what Adani are you talking about यार? तेरे खुद की गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ पैसे पड़ी है कि तुम हमारा पोर्ट चलाओ. Which tells you that she is not on the same page as the government of वेस्ट बंगाल. तो मतलब वो तो लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है. व्हाट इज अ क्लेम टू फेम? आई थिंक जेपी मॉर्गन में वो वाइस प्रेसिडेंट थी. अरे यार, हजारों वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जेपी मॉर्गन में. There are 14,000 of them, sir, in JP Morgan. 5 साल कर लेते तो if you continue with them, you get promoted as vice president यार. किसका मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, बट वहां पर वाइस प्रेसिडेंट एंटरटेनमेंट भी है. ओ ये सब कुछ है, हर चीज यार. ठीक है, 5 साल की नौकरी कर लो, you get to that scale and you're called a vice president. कि बंदे को अच्छा लगता है, I'm vice president in JP Morgan. Vice president in JP Morgan doesn't mean you're number 2 यार. You might be number 2,000 or 22,000. For all you know. Much better. So that is all her claim to fame. तो सर एक तो वो है, मतलब जॉर्ज सोरोस ने बेसिकली एक स्टेप आगे ले लिया जो उसने उसको नहीं लेना चाहिए था. दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से. ठीक है. तो सर अभी दूसरा जो एक बेसिक सवाल काफी लोगों को, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस पीपल डोंट अंडरस्टैंड, एंड ये चीज आई थिंक आप थोड़ा अच्छे से समझा पाओगे सर, द कनेक्शन बिटवीन लेफ्टिस्ट एंड मार्क्सिस्ट. क्योंकि मेरा एक, इफ आई टेक 30 सेकंड सर, जब वो मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चर नीचे गिरा था सोवियत यूनियन में, ये लेफ्टिस्ट को रियलाइज हुआ यार ये स्ट्रक्चर अगर नीचे गिर गया है, हम लोग वो ही वर्ड्स लेके नहीं यूज कर सकते आगे. वी नीड टू फ्लिप आवरसेल्व्स टू अ डेमोक्रेटिक वैल्यू, बट
जो आप That is आप what वो ESG is all about. that's what ESG is all about. ठीक है सर. Now And वो कौन सा ये एक जो और है, they have a foundation there ना, democracy foundation something in USA, new democracy हाँ something, endowment for democracy, endowment for democracy, which national is also national. this. It sounds nice, but when you go through the details, you realize that they're absolutely anti-democracy. Yeah? And it's Yikes. laughable when these leftists call Zelensky as a democracy. Yeah? The fight against democracy and autocracy. Zelensky is even more autocratic than the Russians. Yeah, Putin se zyada Yeah. autocratic hai. So that is what they changed all the words, that we should not use any Marxist Leninist words and bring in phrases which are amenable to a democratic value, but working towards that. That's why I call them extreme leftists. They are even ठीक है. worse than the Marxists. हाँ मार्क्सिस्ट के अंदर ये नहीं था कि वो आप मार्क्सिस्ट के अंदर एक चीज था, दे बिलीव्ड इन द फैमिली स्ट्रक्चर. वो extreme Marxists में they don't believe in family structure. नहीं एक्सट्रीम That was what was मार्क्सिस्ट the cultural revolution all about. But the दैट वाज basic Marxist Leninist structure is family. जी. Family, and the next is the party. Family and the party. Extreme Marxist में there is no family, all party. हाँ दैट इज इंडिविजुअलिज्म जिसको बोलते हैं सर. Yeah, which is what Mao wanted to do and which is what Xi Jinping is doing. जी जी जी. There are no family norms and anything. You obey what I say. इसीलिए तो स्कूल में शी जिनपिंग थॉट भी पढ़ा रहा है. इनका बस चले तो ये अपना थॉट्स पढ़ाना शुरू कर दे. बट एटलीस्ट ये है कि मार्क्सिस्ट एंड एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट में they don't deceive, they openly come up and say what they're wanting to do. They use deception, deceive you by the words, and then when you fall in the trap, you realize कि यार this is something ridiculous what they're wanting. It's a global family, or you could say everybody, there are no borders, everybody is together, but then everybody is controlled directly by the party hierarchy. That's the point. That is the order that they are looking at. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं. कमिंग क्लोज टू अबाउट 2100 पीपल हु आर वाचिंग. तो गाइस जरा लाइक्स ठोकने नहीं है, और एक ही बारी दबाना यार. कई बारी आप लोग दो बारी दबा देते हो, एक बारी ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है. तो एक ही बारी प्लीज. डबल क्लिक नहीं है, डबल क्लिक नहीं है, सिंगल क्लिक है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार देखिए, मैं आपको मेरे को जो सवाल पूछना है सर से, सर लेफ्ट भी देखिए बेवकूफ तो नहीं है. लेट्स पुट दैट अक्रॉस वेरी क्लियरली. ठीक है, लेफ्ट इज दे आर स्मार्ट गाइज, देव रन द ब्लडी शो फॉर सो लॉन्ग. एंड जो 91 90 89 90 में जब वो लेफ्ट खत्म हुआ, जो एक मार्क्सिज्म खत्म हुआ, इफ आई मे, आई मीन नॉट खत्म नहीं हुआ, बट एटलीस्ट दैट स्ट्रक्चर ऑफ मार्क्सिज्म, सोवियत यूनियन गिरा नीचे. बिकॉज ये जो शी जिनपिंग करता है वो मार्क्सिज्म नहीं है, वो पता नहीं क्या है. आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट इज. तो ये जो हाँ चलो ठीक है, पिंग पोंगिज्म बोलते हैं सर उसको. सर जो लेफ्ट था उसने रियलाइज करा यार ये मार्क्सिज्म तो गया, अगर हम यही चीज बोलेंगे तो हमको निकाल के बाहर मारेंगे लोग. दे ट्राई टू reinvent themselves, they became democratic. आपने ये पूरी बड़ी अच्छी तरह समझाया है. And they've been able to switch sides बड़े आराम से. वो शुप करके जाके डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कैपिटलिज्म में जाके बैठ गए, नो प्रॉब्लम. मेरे को ये बताइए सर, ये अब क्या होगा? बिकॉज ये लोग भी दे वोंट जस्ट रोल ओवर एंड डाई. ये चद्दर तान के सो तो नहीं जाएंगे. क्या होने वाला है सर? वेयर डू यू सी द नेक्स्ट साइड ऑफ दिस थिंग? एंड सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछता हूँ, दो तीन नाम सबके दिमागों में है, बट हु इज द नेक्स्ट जॉर्ज सोरोस? See, the next George Soros, you have Elon Musk is there.
I look at Belinda Gates also could come in, because at some point in time Bill Gates will also go under the bus. बहुत टाइम नहीं है उसके Bill, लिए. उसके पास टाइम नहीं है, and he has come into prominence with a lot of wrong statements and then trying to cover up for it. That I did. नहीं नहीं, उसका प्रोमिनेंस गड़बड़ हुआ है सर, उससे क्या नाम है, Epstein. एप्स्टीन से. उसके अलावा, apart from that, is his statement that the population is of the world is growing, the resources can't match with that, so those who don't contribute to the resources should not be allowed to live. That is his statement. जी. Calling for mass genocide, which didn't go down well, and so even people have not liked it, and they feel that the COVID is also a plan of these people along with China, जो spread हुआ है, and the manner in which they were forcing people to take. And Pfizer has come now, more and more it's coming under a very bad light that is affecting people's hearts. They didn't expect that other nations, global south, bulk of global south will not take Pfizer. दिमाग होना चाहिए था यार. Pfizer requires you to store it at -17. किसके पास होता है इस तरह से गांव में यार -17 -30 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखने का? ग्लोबल साउथ में कहाँ है ये? नॉर्मल फ्रिज होता है यार, फ्रिज में रख लो. तुम तो पता नहीं डीप फ्रीज का भी डीप फ्रीज मांग रहे हो कैसे, एंड हाउ डू यू टेक इट? And so you find that a lot of Pfizer was used in US only, and now they are having problems, health problems, and they're not able to give an answer, and it is turning out that they had done no trials. Correct. Most of the trials were cooked up. So these are issues on which Bill Gates will also, and Bill Gates is one of the biggest funders of Pfizer. That's what I'm saying. Dheere dheere you will find Bill Gates will also get sidelined, and Melinda Gates may come up. I really don't know her antecedents, whether she is left or way she is. That's why I said you got to be very careful. You might find Adani also coming in. Reliance आता नहीं आता because Adani has come in the limelight, and Adani का हाथ पकड़ा हुआ है इन्होंने. Whether will he be the Soros or will he be one of the funds who manages the funds and provides the funds to them? So you do have such people coming up who will come up. So the selection, they have to be very careful whom they do. And I have a feeling that Elon Musk and maybe Adani, both of them might be on board by now. And that is the reason why George Soros was thrown under the bus. नहीं, बिकॉज इलॉन मस्क ने जिस तरह से उस दिन ऑफ ऑल द पीपल उसने आई मीन डिज्नी को बोल दिया, you know, that's something which is, भाई तुम नहीं दे रहे हो तो जाओ यार, go F yourself यार. and he said it in very bluntly. So you find that this is the kind of tussle which will open up, and Elon Musk, Adani, maybe some other companies from the US, maybe somebody from Latin America also might come up. Who survives? Because this flux and the churning, somebody has to survive and come up. And I'm betting on Adani being a great survivor. Will quietly Reliance also come in? Could be. Mukesh Ambani. तो इंडिया से एक नहीं तो दो होंगे ही होंगे. ऑब्वियसली सर, वो बिना उसके कैसे चलेगा आपका? नहीं चलेगा. तो वही देख रहा हूं मैं, कौन कौन आएंगे कौन जाएंगे. आई डोंट थिंक रतन टाटा और महिंद्रा विल बी देयर. खत्म है वो. दे विल नॉट बी. मेरे हिसाब से सर रतन टाटास भी जब तक. सर मेरा इको आ रहा है, थोड़ा सा स्पीकर आगे कर दें. अभी आ रहा? आई डोंट थिंक सो. नहीं, परफेक्ट.
मेरा आई मीन टाटास का भी सर मेरे को लगता है they're just keeping quiet जब तक the big man is there. जैसे ही वो जाएगा फिर टाटास के ऊपर गेम No, होगा. see, that stands up outside ना कि Harvard, which is the main hub of anti-India and anti-Semitic activity, आपने उनको पैसे दिए हैं और अपना एक टाटा हॉल बन गया है, and a chair you are doing in the humanities sector. It is not that. नहीं, Then बहुत ही गलत similarly, है. Anand Mahindra gave $10 billion to a chair for the humanities in his mother's name. So these things are not forgotten in a hurry. Yeah? So, but it takes a while to change the narratives, to get the new set of people in place. So it's going to take a generational shift, but in about a decade or so, you'll find that the hold of the left will start weakening. Not that they have gone, the hold will start weakening. And then you have to start identifying these people who are there. Because after all, let us say Newland is there. She comes with her whole echo chamber of staff. Na? अब एक को निकालने से तो काम नहीं होगा ना. So धीरे धीरे at every level you have to start weeding out. See, आप लगा लो JNU में weeding out कब से शुरू हुआ? अभी भी चल रहा है. बहुत जोर से चल रहा है. चल रहा कमल है, सिब्बल बट इज देयर सर. चल रहा है तो बट टाइम लग रहा है ना. हाँ. That's the whole issue. The moment you've created, your people have gone in there for generations now, 3 generations. यार 30 साल हो गए, 30-40 साल 50 साल हो गए ये सब करते हुए. अब उसको एट एवरी लेवल आपको निकालना. इट इज टॉप टू बॉटम. द रॉट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यार they have not permitted anybody else to grow inside na, if he is not of your thought. आप उसके थॉट के नहीं हो तो you have been sidelined. So you have to do that. That's why I said it's going to take time, and in 10 years it will weaken. And you have to keep at it and start giving a thought. How do you isolate and sort out these extreme Islamists? And I have given you one option, which the Dutch PM gave. पकड़ो सबको और भेज दो. Go there and live in your countries and let those Islamic countries sort them out. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. वो तो है कर सर. सकते, वो तो कर सकते हैं. हमें अपने उसका सोचना है कि इनकी सोच को कैसे बदलें. और वो योगी जी दिखा रहे हैं इन यूपी. वहाँ तो मदरसे कुछ के नहीं सारे है. सीबीएसई के नीचे ले आओ. आप मदरसे में पढ़ो, बोलो भाई साहब सीबीएसई है. एंड आई लाइक वन थिंग विच दिस चैप आल्सो डिड, दो इट वाज टू सप्रेस अ कल्चर, बट आई वुड से कि भाई जब तक 12वीं पास नहीं हो आप मुल्ला का टेस्ट पढ़ाई करने के लिए जा नहीं सकते. आप पहले सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के 12वीं क्लास पास करिए, उसके बाद एनरोल करिए. जहां पे भी जाना है, आपको मुल्ला बनना है, गुड, जाइए एनरोल करिए और बनिए. उसके पहले आप जा नहीं सकते. तो बच्चे का फंडा नहीं गलत होता ना तब तक. बेसिक एजुकेशन तो आ गया ना. वहां जाके जो भी कोई आके अनशन ट्राई करेगा बोलने के लिए तो लड़का बोलेगा ना, बच्चा नहीं बोल पाएगा. बल्कि लड़का तो बोल पाएगा कि क्या बोल रहे हो जी. So these kinds of things, like I was in Tajikistan. They have a ministry of religious institutions. मदरसे में और मस्जिद के अंदर भी मदरसे का एजुकेशन क्या होगा, that is controlled by the ministry. The speech on every Friday what is to be given is controlled by the ministry. किसी को हक नहीं है वहां खड़े होके आप कुछ भी बोल दो. Even there in the church, in the pulpit, एक दो चर्च हैं, वहां पे भी प्रीस्ट जो है
अपना स्पीच नहीं दे सकता, he has to get it cleared from the ministry before he can talk. What am I talking? Some degree of control has to be brought in to prevent the spread of disinformation through such speeches. I don't say everybody does it, but there are some who do it. So some things India has also to I start think that one thinking. difference that needs to be understood, that the problem is Islamism, right? The And promism is that extreme Islamism. yeah. So ये जो That is the political problem. Islam and this and that, any sort of religiosity in political this thing will create trouble for you, because it will create with the diverse environment जैसे आप बैठे हैं जिस जगह पे, एंड दुनिया भर में यही चीज है. इट्स नॉट दैट आपके यहाँ पर स्पेशल है उधर पे है, आप And everywhere जहाँ it is there. Yeah. Everywhere पोलिटिसाइज it is करोगे there. प्रॉब्लम होगी. जी, लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस. अब गाइस थोड़े से आप लाइक्स थोड़े से बढ़ाइए. 900 तो पहुंच गए हैं, 2300 बंदे हैं हमारे पास यार. वी शुड बी एबल टू एक्चुअली हैव अ लॉट मोर लाइक्स. सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं करा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, अगर आप ये चैनल को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और लोगों को प्लीज बताइए. 1,18,000 पे हम लोग आ चुके हैं. आई थिंक वी शुड बी एबल टू हिट अ 1,30,000 मार्क बाय द मंथ एंड, अगर आप सबकी मदद रहेगी. सो फॉर दैट प्लीज लाइक, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. एंड आप लोग मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, या फिर आप पेपैल यूज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स भेज सकते हैं. पहले सुपर चैट्स क्वेश्चन ले लेते हैं. लिमिट जी, थैंक यू सो मच. ही सेज आई सी सिविल वॉर इन द यूएस in 25 years due to high living cost. I don't think so. My daughter lives there. Yeah. She is not cribbed about high cost of living as yet. So, but the civil war, I don't think a country which is scared of body bags will not go into a civil war. आप देख लो कितना डरते हैं वो बॉडी बैग्स. The society is very scared of body bags. Even in Afghanistan, they didn't take back all their soldiers who were dead or injured to US. वहीं के Near वहीं. Munich, they have in Germany near Munich. I'm forgetting the name of the place. G से एक नाम है. वो They have one of the biggest NATO hospitals. सेकंड वर्ल्ड वॉर का है. हाँ. No, no, no. They have the biggest NATO hospital. All these people were taken there, and their cemetery is also there only. And quietly, people have been told वहाँ पे है, वो वहाँ पे जाते हैं. जी. So if you have people scared of body bags, I don't think the people are ready for a civil war. Civil disturbance is different from civil war. जी. Civil disturbance, yes. Average middle class gamer, thank you so much. Sir, these Ivy Leagues are now glorified madrasas. मदरसा टाइप ही है यार. Divine Nature, thank you so much for becoming a member. Pravlamb, thank you so much for your contribution. He says, Sir, Soros is part of the old deep state who will come on top. Old versus new deep state, if there's such a thing. How does Bharat look at the new deep state? Bharat is part of the new deep state. Bharat is the fulcrum of the new deep state. Without Bharat, the new deep state will not work. Old has outlived its utility. It's over. Ji. Ameya ji, thank you so much. He says, Sir, I have two questions. Zakir Naik is recommending is a Muslim NATO. On any thoughts on this? China, if China attacks us with help of Pakistan, which country will help us out? अमेय सांबरेकर, सबसे पहली बात, मुस्लिम नेटो इज अ पाइप ड्रीम. तो आपस में लड़ते हैं यार, तो कौन सी नेटो बनेगी? नेटो में यूएस इज द अनडिक्लेयर्ड लीडर, ही इज द बॉस, ही डिसाइड्स. मुस्लिम नेटो में हु विल डिसाइड? ये बता दो मेरे को. पाकिस्तान जो फक्कड़ देने अपने बेगर से भी बेगर नेशन है, उसके भी ख्वाब है कि मैं आई शुड बी द कैलिफ. The caliphate should be based here. Then you have Turkey, then you have Saudi Arabia, you have UAE, you have Iran. कौन सा मुस्लिम नेटो बनेगा यार? Just forget it. If China attacks us, पाकिस्तान तो छोड़ दो, वो अपने आप को संभाल ले, वो बहुत है. इतने बार हमारे साथ जो झड़प हुई है, कौन आया मदद के लिए? हथियार आ जाएंगे आपको जहां से आपको चाहते हैं. लड़ना आपको खुद है.
That is why I keep saying that please make sure you can't say that I am trying to improve my economy, so I can't spare money for the defense. Sorry, both go hand in hand. You cannot be economically strong unless you are capable of providing a secure environment, and the secure environment is provided by the uniformed force. And the uniformed force is not just your military; it's also your internal law and order force. Please remember that both go hand in hand. अब डोंट वरी, चाइना हम पे ऊपर अटैक करेगा तो अब की बार बहुत बुरी तरह पिटेगा, बहुत मार खाएगा। क्योंकि वो उसके पीएलए इटसेल्फ is in a split and a quandary. They don't want to fight. Half of them don't want to fight. लड़ लो. JKG, thank you so much for becoming a member. TKC, thank you so much for your contribution. And Rahul Lakshmanji, thank you so much. He says, regarding foreign universities set up in Bharat to prevent brain drain, will they change us or could we change them? We will change them. The Harvard here in India will not be the Harvard of US. It will be the Harvard of Bharat. So it's not the Harvard of US, sir. It's the Harvard of Hamas. अब तो Harvard of Hamas हो गया ना. ठीक है. Harvard in US of Hamas. Sponsored by Hamas. The Harvard of Bharat. RKG, thank you so much for once again becoming a member. Problem Sub, thank you so much. He says, General Sir, Bipin Rawat साहब का accident was really an accident or big loss. Please अपना honest opinion दीजिए. MI-17 को remotely hack कर सकते हैं क्या? General, this was an accident. See, I've flown a lot in the mountain areas also, low hills also. The Nilgiris is like that. The cutoff time to cross the valleys is 12. He was way past 12. He was at 1:15. He was late and he came late and he forced himself to go. And that's it. You may find two valleys across bilkul khali hai. Yeah. And two valleys this side must be full of fog. ये ऐसे ही है, ये जगह ही ऐसे है. Yeah. There I was a bachelor. I still remember ground floor में मेरा mess में कमरा होता था, room number 18. Mine was the only room. If I opened the balcony door and the front door, the low clouds used to go through my room. Huh. And we have had so many parties in the veranda at the back, chairs बैठ के, as if we were gods. घुटने घुटने तक यार clouds जा रहे हैं. And only my room, no other room. Seconds में आते हैं वो. Just comes. Just only appear. My room to either side, ना वहां से नहीं जाता. It used to come through my room. So you have like that, it comes and goes. We got caught in that only. And once you get caught in that, पता नहीं लगता यार कहाँ हो. And ये एक Chinese narrative है. It bounced off a tree, and once you have bounced off a tree, thereafter I don't think the pilot can control. ये जो इन्होंने बोला था सर, ये बड़ा Chinese narrative है कि China is doing everything, China is this thing, China is that thing. So, you know, eyewitness account. It came slightly low, bounced off the tree, and then went sideways and crashed into that place. The hillside was steep, so it crashed into that and caught fire. Angry Hanumanji, thank you so much. He says, Pranam sir, वो भागड़ बिल्ला सोरोस का इतना कारनामा जब वर्ल्ड को पता है तो उसको पिंजरे में क्यों नहीं डालते? He has too many skeletons available of all these people in his cupboard. Insurance policy बोलते हैं उसको. बुढ़ा हो गया यार. I think he is 92 or 93 years old. They must be just waiting. Kissinger चला गया है, ये भी चला जाएगा. जी. Partha sahab, what is the latest news of the naval vessels in West Asia? An escalation seems unlikely. Escalation होगा, but in a different area. उसके बारे में मैं सर को I'll try and get him for a half an hour next week, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ सर, आपने जो हमको शुरू में बताया था ना, इजराइल में क्या होगा, गाजा में क्या होगा, exactly वही हो रहा है. So next week में आप बताइए सर, whenever we'll record this episode so that it's just half an hour. Battle tactics क्या होने वाली है, we'll just record this and we'll put it out so that
then we अब आप can देख build लो on वो that. गाजा सिटी के मेन स्क्वायर के ऊपर वो हनुका का सिंबल आ चुका है। झंडा भी लगा चुके हैं सर. Thought provocator, he says stop mullah going to mullah with halal and waqf ban and mount Soros on Soros with ruthless, relentless legal action to control these rogue elements. Well, लीगल एक्शन में there are others also involved who have a lot of, like I said, there are a lot of skeletons that they have. So you got to sort them out quietly, carefully, and start sidelining them. जी. So you got to actually what they say कि उनको बदनाम करके साइड में करना है ताकि वो केस भी लेके आएगा तो कोई बिलीव नहीं करे। तो ये है। As far as मिट्टी. halal is concerned, यूपी ने तो कर दिया है, has shown the way. हलाल सर्टिफिकेशन बंद कर दिया कि anyone who brings in with halal certification will not be allowed to sell in UP. Everybody is towing the line there. So you have to come out in strength and say that sorry. And so it takes time, but हो जाएगा, no worry. So Ravi Malhotra ji, he says great discussion always, General Rajiv ji. Thank you, sir. And Raghunandan Saab says, sir, we could not recognize Ivy League university degree and make sure one that have Ivy League degrees don't get jobs in India. Your views on it? Raghunandan ji is not so easy. Not so easy. Step by step approach लेके चलना पड़ेगा because then see you have a association of international universities where all the recognitions are registered. You take it out from there, they will take it out from you, then your students can't go anywhere to study. So it has to be in a phased manner. That's why I said जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, step by step approach करते जाना है. So this is what I had given you till 2034, 35, not immediate. Because you have to be careful you are able to take on the repercussions and the backlash. बहुत ज्यादा कर दोगे, बैकलैश बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके चलो, फेज्ड एडेप्टिव मैनर कि फेज करो, ये किया, उसने बैकलैश किया, इस तरह से हुआ, अडेप्ट टू दैट एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप. दैट इज द फेज्ड एडेप्टिव मैनर. तो उस तरह से चलोगे तो आप सक्सेसफुल. इन चीजों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती. गुस्सा आता है, सबको आता है, बट जल्दबाजी अच्छी नहीं होती. यू हैव टू डू थिंग्स अ लिटिल मोर मैच्योरली. Absolutely. Harshdeep ji, hello, So I'll General just sir. add, that is the first step which this government has taken कि उनको अपना फ्रेंचाइज यहाँ ले आओ ना. वहां कंट्रोल नहीं कर सकते उनको, यहाँ ले आओ तो डंडे मार के आप कंट्रोल कर लोगे कि करना क्या है. So you are having Ivy League colleges here, but they have adapted to what your requirement is, to what Bharat's requirement is. Now they can, your students from here going out cannot be denied by anybody. It's an Ivy League equivalent. Yeah. Absolutely. Harshdeep ji, hello, General sir. And Aadi. पैसे मिल रहे हैं उनको. Why won't the military industry complex favor you? उनका धंधा बंद हो रहा है. आप कह रहे हो कि यहाँ आके बनाओ, वो तो तैयार है यार. आप पैसे दे रहे हो, बिजनेस दे रहे हो उसको. And by coming here, it is not just the Indian military that he targets the region. सबको मिलता. वो तो open-ended है ना sir. Yeah. YL leftists think that they have perfected the victim card. It's usually SOP, पकड़े जाने पर victim card खेलो. अब खत्म हो गया वो टूल किट यार. महुआ मित्रा को कौन, मैं तो हंसता हूँ जब वो उसको देखता हूँ. कभी किसी जमाने में हाय बोलते थे, अब तो कौन, वो तो लेडीज कार्ड चल पड़ी, हाय तौबा कर रही है, सब कुछ कर रही है. हु इज लिसनिंग टू हर यार, एक्सेप्ट फॉर दी वो यू नो हु दे आर. एक तो राजदीप सरदेसाई उसके साथ खड़ा होगा, एनडीटीवी वाले बंदे उसके साथ खड़े होंगे, और कौन खड़ा है यार? नहीं, एनडीटीवी सर चेंज हो गया है, आप देखो. वो भी बस राजदीप सरदेसाई अकेला है. आवाजें चेंज हो वो गई है हैं, पता है एनडीटीवी के अंदर. सागरिका घोष, सुहासिनी हैदर, दीज आर यू नो देयर नेम्स यार. कौन आके खड़े होंगे सबको मालूम है. अब आज के तारीख में तो कौन बिलीव करता है. ये तो अभी रो रही है इतने में, अभी तो सीबीआई का केस जब खुलेगा फिर पता लगेगा उसको क्या हो रहा है.
और सीबीआई के साथ ईडी का भी केस हो रहा है, वो ईडी को भी भेजा है कि इतने इतने ट्रिप गई है, इसके पैसे इसने दिखाए नहीं है। अब ईडी खोलेगा उसके अगेंस्ट केस, और वो नॉन बेलेबल वारंट है, वो तो जेल में भी बैठेगी और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। वही होता है ना, सर मुडवाते ओले पड़े। खुदानी जी कहते हैं Christianity and Islam emanate from Judaism. If history of Ramses II and Moses be true, then Judaism was anti-establishment, and the same way, same many will be said for the offsprings. रामसेस टू एंड मोसेस का बड़ा अलग है. Moses was born a Jew, and since at that time, I think Ramses' father was felt threatened that somebody from the Jews, a young baby, would be like हमने कृष्णा का बोलते थे ना, कंस गया था सारे बच्चों को वध किया था. So Ramses' father was killing all the babies. So his mother had sent the baby into the Nile in a reed basket. Was found by the maid of the queen and brought, and that is how Moses, otherwise his actual birth name was Moshe, not Moses, Moshe. And that is how they came. But he used to still have those memories still of family. So they were not brothers in any case. So that story is slightly different. Yes. Hey, See, pardon, you were saying something? Apart from that, sir, Jesus' language was Aramaic. Yeah. See, now as far as Christianity is concerned, Old Testament, what the Christians call is actually Torah. Okay. Based on what Moses had said, based on his 10 commandments and other history of their tribes and other things, that is the Old Testament. Except for a few teachings of Jesus and the book of various disciples, quite a lot of the Old Testament is there in the New Testament, and quite a lot from the New Testament and the Old Testament is there in Quran. Obviously, sir, that's what I was trying to say. Jesus' language was Aramaic. Aramaic is one of the two Semitic languages. One is Hebrew and second is Aramaic. So we know where the origins are. It's a I mean, I know. That is why if you look at Quran and the Hadith, कई लोग गलत बोलते हैं कि हिंदुओं को काफिर बोलते हैं. You're not a kafir. You're a mushrik. You're as low as an animal, worthy of slaughter. Kafir are the non-Muslim followers of the book, which is Jews and Christians. The Jews and Christians are the other two Abrahamic religions who are followers of the book. We are not followers of the book. We are not kafir. We are mushrik. कभी गूगल करके ये पढ़ लेना. लोग गलत बोलते हैं that you are a kafir. You are not a kafir. You are a lower than a kafir, almost an animal. Animal को तो वो slaughter करते हैं, मुशरिक. Angry Hanumanji, thank you so much for becoming a member. Mr. E, hi, I'm Mr. A. Thank you so much for your contribution. Special exam work to India, 50% tax on can't do that. IB The University only education. see, if I clear my MBA, let's say from IIM, I don't have to clear any exam. MBA किया हुआ है, I can go and work anywhere in the world because it is recognized by the university. The only exam that you have to clear is your medicals. If you go and study medical somewhere else, you have to clear your Indian medical exam here, especially people who go to Russia, Central Asia, these places. West में जाके पढ़ के आओ, you don't need to give an exam. For these places, the kind of medicine that you're taught is very different. So before you can do your practice here, the Indian Medical Association का exam होता है, you have to clear that exam. Only if you pass that exam can you practice in it. Chan Kirash, thank you so much for becoming a member.
Vikram Shah asked Adi how anti-India forces infiltrated Parliament of India and MPs. ऐसे ही आते हैं यार, जेएनयू से निकल के आए हैं, कोई आईवी लीग से निकल के आया है, कोई कहीं से निकल के आया है. आई टोल्ड यू दे हैव स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द ग्लोब. जी. तो उनके पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो आगे हैं. तो General सबसे sir, बड़ा तो वो कपिल सिब्बल है यार. सुप्रीम कोर्ट में कहता है असम वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट वाज पार्ट ऑफ म्यांमार. तो गधे को हिस्ट्री भी आता है कुछ. पता नहीं कौन से जमाने में रहते हैं. Adi sir, pranam. We found that Islamists target the leftist first whenever they get a chance. So these people are blind or they are so woke to realize LGBTQ is haram in Islam. Maitri ji, that's why I questioned who's using whom. नहीं, Strange bedfellow. Gaza में they are allowed, sir, because the punishment is throw them out of the building. There are no more buildings left, so Yeah, so they're it's saying a आरो strange आरो. bedfellows. So now नहीं, they are वहाँ बिल्डिंग ही facing नहीं है ना the. फेंकने के लिए. They used to hang people and throw them down. अब वो कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी हुई तो कहाँ से फेंकेंगे? So now they're saying यार वो punishment ही नहीं है तो वहाँ जाओ, कोई बात नहीं. Nimish ji, thank you so much. All religion needs to know that change is the only constant. Yes, absolutely. Fantastic statement, I think. यशराज आदि सर, थोड़ा सा करेक्शन. गाजा में तो सीना, गाजा को सीना में फेंक देना चाहिए. सीना is my name for China, sir. So Yeah, Xi China. Jinping She and got China. She got China is China. सही बात है. भेज दो. absolutely. कार्व आउट कर दो, कोई एक जगह बोलो, भेज दो उसको. चलो क्राउड एक्चुअली फंडिंग करते हैं. गाजा को शिनचांग में फेंक देना चाहिए. क्राउड फंडिंग करते हैं. To send them to Xinjiang. I know. Divine Nature does largely Behna Yogna program. Promotes similar to what the West does for the woman. Will it have problems like the West? Nope. Nope. It is how you Because use it and how you apply it. That is where it बेसिक is. वैल्यूज डिफरेंट है यार, बहुत ज्यादा डिफरेंट है. आई थिंक अप्लाई एप्लीकेशन जो सर ने बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं कॉन्सेप्ट की तरफ से बोल रहा था, सर हैज पुट इट ऑन द एप्लीकेशन पार्ट. Harish Gupta ji, does this give an option to Indian Institute to promote themselves to bring back good talent from these institutions? We can link this to an India growth. I'm saying, see, my view of the Indian institution is all these big ticket companies and all, why are you giving money abroad? You start giving money here. Start giving. Why should my taxpayers' money be used to cut down the tuition fees in IITs and other these places? No. You give scholarships. Like various, once the college has got a good corpus of money, they'll be able to give scholarship based on merit and scholarship based on economic conditions. Okay, that is how the institutions in the West work. You get scholarship on merit, and scholarship on merit is graded also. You may get 100% scholarship, 75%, 50%, 25%. उस तरह से बना के आप अपने सब्सिडाइज करो ना. मेरे टैक्स पेयर के पैसे से क्यों सब्सिडाइज कर रहे जी. मत करो, उधर से करो. You'll automatically find the institution's performances increasing and going better. The reach will become more and more people will like to come there. Fund. अब वो आप टाटा चेयर और ये चेयर वो चेयर वहां बना रहे हो, यहां बनाओ ना. Make all these chairs. Provide money for all those things. You have to look at how you're going to change your own education system to improve it. I entirely agree. Why should my scholars go abroad? मेरे को तो सबसे ज्यादा दुख होता है जब एडवर्टाइजमेंट आता है लेटेस्ट जापानीज टेक्नोलॉजी का पेंट है. यार हम हमारे इंस्टीट्यूशंस मारे गए. इंडियन टेक्नोलॉजी के पेंट को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? हम अच्छा पेंट क्यों नहीं बना सकते? So your way you function, labs abroad, they sponsor a whole lot of labs for doing R&D for them.
हमारे यहाँ कहाँ है, कौन स्पॉन्सर? आप R&D के लिए पैसा देते हो? मे बी 0.1 और 0.5%, बहुत ज्यादा खुश अभी है तो थोड़ा इंक्रीज 1%। हुआ है, अभी हाँ तो थोड़ा 6 इंक्रीज to हुआ है सर 10%, हाँ जी। तो 6 to 10% money goes into all these R&D। R&D तुम अपना लैब क्यों बना रहे हो? यही कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मास्टर्स हो रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनको लैब्स में फंडिंग दो, बोलो मेरा ये टारगेट है, ये बना के दो मेरे को। वो कैसे नहीं बना के देगा? बोलो अच्छा बना के दे दोगे तो मैं आपको कंपनी में जॉब दे दूंगा, तो बना के देगा तुमको यार। हमने अपना सोच बदलना है। पैसे कहाँ से लाने? हर चीज गवर्नमेंट से नहीं आनी चाहिए। Why are you looking everywhere for government? That's a socialistic way of thinking. Everything doesn't need to come from the government. Why do you have these big business houses to give money to labs and colleges abroad? Then why is he doing business in India? Why is he based in India? Give it here. वहां देना चाहते हो दो, but first priority has to be here. Then you will find everything changing. My apologies. uh, does Harvard donation thing come under Indian CSR? No, it doesn't. I didn't know that. It Okay. doesn't. Abhishek ji, sir, how leftists won't be able to watch and learn from your sessions because of your background color? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, Yeah, बैकग्राउंड it's my कलर से कोई फर्क नहीं favorite पड़ता। color. Yeah. Kunal ji, thank you so much. Colleges earn from successful parents. R&D is important. Indeed. JK, please do a show on Muslim Brotherhood and its affiliation around the world in India. तो ठीक है, विल टच ऑन दैट। Hello, Newman. How ह्यूमन, realistic फर्स्टली इट्स अ मेजर is जनरल, नॉट अ Major मेजर। General? मैं एक्चुअली खत्म करके बोलने वाला था क्वेश्चन, नॉट मेजर, बट इट्स मेजर जनरल। ठीक है. So how realistic is a two-state solution given that it is a victory for Sino-Wahhabi leftists and their method of Islamist violence are on and after October 7th? Is it a victory for Sino-Wahhabi? I have a big question mark on that. That's why I said two state is there. पहले भी बोला था two state is there, but two state where? Where is that second state? Nobody has made a comment as yet. लोकेशन Is it बताओ in ना यार. Gaza? Is it in West Bank? Or is it elsewhere? It can be लोकेशन anywhere. बताओ ना. Location किसी ने अभी तक नहीं बोला. They have all. Our government is also saying we support two state. Good. Where is the second state? You know Israel is going to be there. Where is that Palestinian state? $1 million question. At some point, replacement theory, mass immigration to make a white minority in Europe and US, can it happen in India as well? Yeah, if CCA you're is not because careful. of that. CCA is that only. You will not be able to come. And now the replacement theory is being turned its way around, especially in the Dutch, and it may cascade down next year and thereafter in the rest of the Europe, where all these Muslims will be sent out. The two countries which will face a problem. One is France. They brought in whole lot of Algerians and Moroccans because they wanted to control and whatever they wanted to do. So they're there. And the other is UK. Ji. Some are already calling it Londonistan. Rajesh Ravalji, can you please elaborate what action was taken by whom against Soros? The basic action has been that the government of US has trashed the Hindenburg report, which was funded and supported and touted by Soros, that it is Adani is a bad character. That has been trashed. Number two, US along with Japan and Adani are now making another berth in Colombo port and in talks with Sri Lanka to take over that complete port. So the Chinese will go out. So that is what has happened to Soros. He painted himself into a corner. First time ever,
लास्ट पहले भी जब बात किया था, आई वाज सरप्राइज्ड. He has never come out in the open, and the first time he came in the open, thought too much of himself that the leftists will help him. He's crash landed very badly. Very badly. Crash landed very badly. So now nobody is going to think about him. He is outlived his youth. Last couple, sir. 7. Aadi, China is using Islam to kill democracy. At the same time, Middle East is keeping quiet, waiting to see the result of this experiment. A section of players by left is poor. That's why they lose. Is China? How is China using Islam where to kill democracy? It's the other way around. Right. It's the leftists Islam, using. yeah, Islamists, and the Islamists have taken over their countries. Yeah. If they don't throw out their Muslims, like what क्या नाम है उसका, विल्डर जिल्डर क्या नाम है अपने, Gerrit Wilders. Gerrit Wilder. There is a report which says that between 2050 and 2075, Muslims will be the majority population in these countries. Then what do you do? They don't have time. 2050 to 2075. 2050 is just 30 years down the line. Yeah, 26 years down the line. Because in any case, white birth rate is gone down, and thanks to their social cover, every baby born you get extra, and he has 4 wives to permit him. 8 बच्चे तो वो लेके घूम रहा है यार. तुम्हारे पास तो एक भी बच्चा नहीं हो रहा है, मुश्किल से एक बच्चा हो रहा है. They'll take over the country thereafter. Then what do you do? That is the reason why the right is on the rise in Europe. Nationalism is, I would not say right, I would say the nationalistic parties are on the rise, that we will lose our identity. वेंकी साहब से कोई माने या ना माने, सोरोस के जाने से सबसे अधिक नुकसान श्री बराक ओबामा जी, हिलरी माता, डॉर्सी महाराज और भारत में पप्पू श्रीमान का होगा. शिरोमणि. सही पकड़े आप. बराक ओबामा तो माउथपीस है, असली फोर्स तो मिशेल ओबामा है पीछे उसकी. नहीं छोड़ रखा उसको भी. प्रेसिडेंट बना. छोड़ दिया सर उसको भी. बराक को छोड़ दिया उसने, पता है आपको? अरे नहीं. She's not been seen with him for past 4 months now. Good. इसका एक रूमर निकला था that Barack Obama was kind of doing stuff with his gay friend or something like that, whatever. So that's what happened. And she went to Spain after that. She was living with the King of Spain. And then she came back. The last time she was seen now was some इनका कुछ डे से होता है when वो ये Biden's wife and Michelle they had gone somewhere in the same aircraft somewhere, and Obama came separately. All the presidents, ex-presidents, and their wives. Yeah. So this is the rumor. I can't. Don't hold me with a gun. Everybody knows here. Barack Obama became a president thanks to his wife. Okay, she was the force behind him, not Barack Obama. He speaks well. That's about all. Full stop. That's about all. Full stop. She's very impressive. Unknown gunmen sponsored by George Soros. क्या पता, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार शायद हो जाए. Okay, that's probably the first political question I have taken on my channel, and I don't know. It was not very political, so I took it up. Rasa Mushrik ideolator is also a kafir. पता नहीं यार. What I know of is Mushrik is below a kafir. Very close to an animal. चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, चलेगा. We are all right. हम लोग we will survive. हाँ, what do you say guys? We will all survive. Of course यार. अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि एक आपने नहीं लिखा था टाइनी ने कि भाई कितने गाजी आए कितने गाजी गए. तो अपना वही है यार, कितने आए कितने गए, आओ और जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है. हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे. Not to worry. भारत रहेगा. ये लोग बोलते हैं ना भारत को ये करना चाहिए वो करना चाहिए. आप ट्राई करो, देखेंगे. All the best to you. All the best to you.
It took the British, टुकड़े it took टुकड़े the गैंग के American. पुतिन ने तो करवट ही बदल लिए हैं, अब तो मोदी Sir, मोदी मोदी कर रहे हैं। it took the British, it took the Americans, it took whole lot of internal forces to break this country in 1947. ठीक है, it took so many people together to bloody break this. And उसके बाद भी आप देख लो वो टूटा नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि there is so much fighting even now. ठीक है, two big superpowers and our internal enemy. इतनी जान लगी थी इस कंट्री को तोड़ने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, इट्स नॉट दैट सिंपल। एंड फॉर अ कंट्री जिसकी जो जड़ें होती है ना ऐसी जबरदस्त हो, मजबूत कल्चर में रूटेड हो, आप ये देखिए, मैं बाकी सब छोड़ दो यार, जब क्राइसिस होती है ना, सब इकट्ठे उत्तराखंड में क्राइसिस हुई, सारे इकट्ठे थे। चेन्नई में क्राइसिस हुई, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड ये वो सब गड्ढे के बाहर गया। इट वेंट आउट द विंडो, द इंटायर नैरेटिव फेल फ्लैट विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, बिकॉज पूरा देश एक हो जाता है वहीं पर ही। आप मेरे को एक ट्वीट दिखा दीजिए कहीं पे बोला हो कि भाई वो डीएमके का है कि चेन्नई के लोगों को डिजर्व डिजर्व किया है। नोबडी विल से दैट। द इंटायर कंट्री स्टैंड्स टुगेदर एंड एवरीबॉडी सेज बोलो बॉस क्या करना है, हम करने को तैयार हैं। ठीक है, सो लेट्स नॉट बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। हमारे अंदर डिवाइड्स बहुत हैं, लेकिन जब बेसिकली आफत व्हाट आती है। पीपल फॉरगेट इज भारत इज लाइक अ बिग फैमिली। किस फैमिली के अंदर लड़ाई नहीं होता, लेकिन जब खानदान के ऊपर आपत्ति आती है, पूरा खानदान एक साथ खड़े होके उस आपत्ति को पार करता है। ये है भारतवर्ष की नींव, ये नहीं भूलना। जी, एक आधा और कमेंट ले लेते हैं सर। या आप दोनों ही अननोन गनमैन तो नहीं हो? हाँ सर, मेरे को हाँ, आइडेंटिफाई हो करके देते सकता हैं, है यार, मैं जाता क्या हूँ। पता। मैं तो सर इतने इज, दिन अंडरग्राउंड था, मैं तो था ही नहीं। मैं तो हफ्ते में एक आधे इतने वाली में में खींच खबर आई लेता हूँ। ना, 2 टपका दिए अंडरग्राउंड गनमैन ने, शायद चार मैं सर, था। क्या बात करो, आपने मेरे को 4 बोले थे। एक अभी शो से पहले मैं ये मार भी के आया हूँ। अच्छी बात है यार, अननोन है तो प्रीतम अननोन ही रहे। प्रीतम जी, थैंक यू सो मच। ही सेज वी विल सर्वाइव, काल्की विल बी बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। किसने श्योर। देखा यार, कल्कि विल बी बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, किधर फैमिली, आई डोंट नो। देखते हैं, वी आर कल्कि मोर अवतार कॉन्फिडेंट कब अबाउट आवर। आएंगे? अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, कल्कि अवतार आने में लाखों, तकरीबन हजारों साल पड़े हैं, करोड़ों इतने साल है। जल्दी नहीं आने वाले। सर कलयुग थैंक यू सो हैज, मच। एज पर ह्यूमन ईयर्स, कलयुग हैज 3,60,000 ईयर्स। ठीक है, 3,102 में शुरू हुआ है, हम तकरीबन 5,000 साल ही निकले हैं। अभी 3,06,000 सम साल अभी और पड़े हुए। 60,000 में से 55,000 ईयर्स, 3,55,000 ईयर्स बचे हुए हैं अभी। वहां कहीं जाके कल की अवतार आएंगे यार, अभी तो शुरू हुआ है कलयुग। तो आप देख लो क्या होगा, शुरू में ही अगर ये हाल है तो बाय द टाइम कलयुग कम्स टुवर्ड्स एन एंड क्या हाल होगा। अभी ये नहीं पता वेदर कल्कि जी विल बी युगावतार। युगावतार वो होता है कि एक अवतार जब वापस अपने लोक में चला जाता है तो युग यहाँ बदल जाता है। जैसे कृष्ण भगवान को युगावतार बोलते, अपने इस कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी 17th 18th नाइट 3102 BC is as per the current calculation when he left the earth and Kalyug shuru. That is why out of all the avatars, only Krishna avatar is called a Yuga avatar. युग बदली। अब कल की अवतार युग बदली होगा या नहीं, आई डोंट नो। हम किस रूप में होंगे, आई डोंट नो। कौन होंगे, किस रूप में होंगे, सो वेदर विल बी अ ब्राह्मण फैमिली, कहाँ होंगे क्या पता। So ऑन when you दैट say नोट a सर, Brahmin family, then you're telling that he'll be like Lord Parshuram, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुक्त कराएंगे असुरों से, बैड पीपल से। That means he has to fight.
So is he going to be like Lord Parshuram, who was born in Sage Jamdagni's family as a Brahmin, but he fought? देखते हैं That's अपने अभी अपना ये जो प्रेजेंट है ना, लाइक दे से द पास्ट इज हिस्ट्री, आप उसका कुछ नहीं कर सकते. द फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है. इट इज द प्रेजेंट. yeah. प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में? गिफ्ट. आप प्रेजेंट देते हो ना, गिफ्ट. सो द प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट फ्रॉम गॉड. लिव दैट प्रॉपरली एज ही वांट्स. आज की तारीख में सही काम करो, सही जियो. कल आता है, कल बोनस है. एवरी डे यू स्लीप, इट्स लाइक यू वांट टू यू डाइड. क्योंकि जब आप स्लीप, डीप स्लीप में चले जाते हो, यू हैव नो अवेयरनेस. डेथ इज ऑल्सो दैट यू हैव नो अवेयरनेस ऑफ दिस वर्ल्ड. when you go to sleep, you have no awareness of this world. Then you rise up in the morning, it's a new day, then do again. So remember, past is history, future is a mystery, it is the present which is a gift from God. Make sure you live properly today. आज की तारीख में उसको सही करो. When I say future means 2 मिनट बाद भी क्या होने वाला है आपको मालूम है? 1 घंटे बाद क्या होने वाला है आपको मालूम है? नहीं मालूम ना. So this is the moment which is the present, which is the gift from God, because you are alive. When your breathing stops, you don't know. So make sure you live properly and correctly as per our dharma, Sanatan dharma ke mutabik. That's it. You'll sleep happily at night. On that note, sir, thank you so much for spending this afternoon with us. बड़ा मजा आ जाता है आपसे बात करके. I think this was a very interesting topic जो काफी लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा you know it's a little in depth. डीप स्टेट तो होगा कि देखो यार, जब कोई 8-10 लोग मिलते हैं and they control the whole lot of money which is going around in the globe, they will like to see that the globe functions in a way that the money does not go down the drain. ओल्ड था, उसका वो खत्म हो गया, अब नया आएगा. किस शेप साइज में आएगा? लेट्स सी कौन कौन आएंगे, किस शेप साइज में आएगा. आना तो है, with India as the fulcrum, as the dhara, as the base, or rather I would say Bharat as the dhara, as the base. उसको रोक नहीं सकते आप. See, the only thing inevitable in this world is change. That is the only thing which is inevitable. Nothing else is inevitable. Time changes, you change, everyone changes. So change is inevitable. Nothing is permanent. Change is inevitable. So ये change आ रहा है. Let's see in what shape size it comes. Absolutely, sir. So, sir, thank you so much. This is a very, very, very interesting subject क्योंकि you know मैं जैसे बोल रहा था, इससे जो पूरी फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स डिसाइड होगी, डिवाइड होगी और आगे चलेगी. We've had more than 2,000 people sticking on with us for more than 1.5 hours. So wow, it's thank you, please. obvious, thank it you, obviously sir. it obviously Sirs, interests madam, a lot of people. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat.